जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन, जिनको मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि मेरी और सर की काफ़ी बातें होती हैं अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पहले काफ़ी हमने करी हैं, एंड पाकिस्तानी फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी हमने शोज करे हैं। सो गाइज प्लीज चेक आउट दो शोज एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये इमरान खान का खर्चा हो रहा था, उस टाइम पे मेरा और सर का एक एक कॉन्वर्सेशन है जो मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि सर ने बोला था अगला इलेक्शन बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो सर, आप फर्स्टली नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। फर्स्टली यू बीन प्रूवन राइट, इलेक्शन बहुत थैंक यू। इंटरेस्टिंग था। कौन पास है कौन फेल है इसके बारे में थोड़ा सा आज बात करते हैं। सो ओवरऑल सर, लेट्स ओपन द कॉन्वर्सेशन। आपका क्या, व्हाट इज योर एनालिसिस? आपको क्या लगता है क्या हुआ यहाँ पर? वाज दिस प्लान्ड? डिड दिस वर्क द वे द आर्मी वांटेड? क्या गेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद, नमस्कार टू एवरीवन। यस, मैं बहुत दिलचस्पी के साथ इसको फॉलो कर रहा था ऑल दीज डेज, एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु टुक ऑफ राइट इन द बिगनिंग। मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके ऊपर, बिकॉज मैं समझता हूं कि अगर आपको लिखना है, किसी चीज पे एनालाइज एसेस करना है, तो जल्दी करिए। कोई फायदा नहीं कि जब पूरी कहानी खत्म हो जाए उसके बाद आप एनालिसिस लिखना शुरू करें। तो दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द ब्रिटिश। उनके ये सिस्टम में ये है, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में ये सिस्टम है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है आप शुरू कर दीजिए एसेस करना। आपके पास खबर तो बहुत कम होगी, मगर जितनी आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है उसी को इस्तेमाल कर लीजिए। तो वही मैं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, और मुझे याद आया जो हमारा कॉन्वर्जेशन पहले हुआ था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा इस दफे। क्योंकि देखिए, जब ये इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू किया था तो उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था कि दोनों पीपीपी पीएमएलएन जो है दोनों मिल गए हैं साथ साथ, और इनकी स्टेबिलिटी आ गई है। इसी वो उनको भी मालूम था कि 1 साल के लिए है, 9 महीने के लिए है, तो एक दूसरे को वो काटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब अब आपने देखा है कि हालांकि आ गए हैं वो साथ साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए, मगर बिलावल भुट्टो जो है वो बाहर हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि मुझे मैंडेट नहीं मिला है तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। और पीपीपी इज बाइडिंग इट्स टाइम। पीपी इज अ वेरी स्मार्ट पार्टी, बड़े पहुंचे हुए हैं, पुराने हैं वो, और वो सत्ते के लिए उनको वो वैसी चाहत नहीं है कि अंडर 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 एनी सर्कमस्टांसेस हम आएंगे पावर में। वो दे आर बाइडिंग द टाइम, और वो देखेंगे किस तरह से हवा चलेगी। उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान की भी पॉपुलैरिटी बहुत है, जमीन के ऊपर बहुत है, यूथ के अंदर बहुत है, perhaps जो थोड़े रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो द पीपीपी विल प्ले इट्स कार्ड्स अकॉर्डिंगली। इस तरह की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, कहीं भी दुनिया में पॉलिटिक्स में, नो वन अपने मतलब आप पूरे एसेस तो पहले दिन नहीं दिखाएंगे, तो वो सब एस उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास, और धीरे धीरे जैसे उन्होंने कहा है कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट देंगे पीएमएलएन को। आप देखिएगा कि जैसे जैसे बात बढ़ती जाएगी आगे, ये पीएमएलएन को इतना पावरफुल नहीं होने देंगे। अब पीएमएलएन को अगर 75 सीटें मिली हैं तो ये नहीं चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में पीएमएलएन को 120 सीट मिल जाए। फिर मजा किरकिरा हो गया इनका, पूरा इनकी पॉलिटिक्स का मजा किरकिरा हो गया। तो दे विल कीप पुशिंग द अदर, थ्रेटन करेंगे, कुछ करेंगे। ये इसकी वजह से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है बड़ी दिलचस्प रहेंगी अगले कुछ साल, आप देखेंगे। और क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर होगा, अब आप मार्च में देख लीजिए, वो ये जा रहे हैं आईएमएफ के पास, जा रहे हैं दोबारा, इनको जाना भी पड़ रहा है। और दूसरा जो है, इनकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इंपॉर्टेंस जो है, वो किसी से तरह से कम नहीं हुई है। वो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि अभी वासिम मुनीर गए थे वॉशिंगटन, तो वहां पर काफी दिन रहे, काफी लोगों के साथ मिले, उनकी गुफ्तगू हुई वहां पर, और मेरे अजम्पशन के मुताबिक ये एक पूरे अरेंजमेंट के साथ, अमेरिकन कंसेंट के साथ आए वहां से। और वो कंसेंट था कि आप प्ले द गेम जैसे आप चाहते हैं। इमरान खान को नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में इमरान खान को नहीं आना चाहिए, बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स नोज इट। इमरान अगर कोई कट्टर तरीके से एंटी अमेरिकन है तो दैट इज इमरान खान। अदर्स आर ओके, आई मीन दे प्ले बाय द गेम हियर एंड देयर। दूसरा, उन्होंने अमेरिका ने इनको क्लियरली कहा था कि जो भी आप करेंगे
डोंट मेक इट लुक एज इफ इट्स अ हैम हैंडेड थिंग। इसको थोड़ा सफाई के साथ करिए ताकि लगे कि ये क्रेडिबल इलेक्शन है। कोशिश बड़ी की है पाकिस्तान आर्मी ने, मगर मैं आपसे कह सकता हूं कि पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैम हैंडेड ऑपरेशंस दैट दे हैव डन। उसको कुछ हद तक ही चाहने दिया उन्होंने, जैसे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, सब हुआ है। देखिए बावजूद के पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ है, तब भी उनको 97 सीट 100 सीट तब भी मिल गई है। अगर नहीं मिलती तो बड़ा मतलब लगता कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। तो दे ट्राई टू शो देयर क्रेडिबिलिटी थ्रू दैट। सो दिस हैज बीन अ वेल यू कैन कॉल इट अ न्यू ग्रेट गेम। उनकी एक ग्रेट गेम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनल ग्रेट गेम, जिसमें पावर के ऊपर पूरा है। एंड वी आर जस्ट अबाउट सीइंग द फर्स्ट shades of the play which is going to take place over the next few years. So that's the way I look at it. नहीं सर, आपने जो बोले, मैं एक्चुअली एक लास्ट वीक आई सेड दिस ऑन अनदर शो कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो गेम खेली है इस बारी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने ये बोला है कि साहब इनको जीतने दो, पीटीआई एक्स पीटीआई वाले हैं, देव सोल्ड देयर सोल्स टू अस, सिग्नेचर सारे सबके हमारे पास हैं, तो जीतने दो। एक तरफ से दिखेगा पीटीआई जीत गई, दूसरी तरफ से बंदे हमारी जेब में हैं, सो इट डजंट रियली मैटर। So that is one thing which I mean you thank you for confirming. मैं वही बात कह रहा हूं दूसरे लफ्जों में कि क्रेडिबिलिटी, ये अग्रीमेंट था perhaps with the United States के देखिए क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। नहीं तो कल अमेरिकन जो है उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जहां तक IMF का लोन है, जहां तक और चीजें हैं कि इनकी अहमियत जो है, जिस तरह से इनकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनी हुई है, they will not be able to support it if the Pakistan army shows a very ham-handed way of doing things. इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, क्रेडिबिलिटी के ऊपर। चलिए आते हैं सर नवाज शरीफ के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, ये तो आई मीन मिस्टेक कमिंग बैक बिकॉज ही वाज, आई मीन उसको जिताया इन लोगों ने लिटरली, बाय द एंड ऑफ इट उसको तो लिटरली जिताया है। ये तो देखिए नो डाउट अबाउट इट कि अपनी बल पे नवाज शरीफ साहब नहीं जीत सके। He seems to have lost it. अब देखिए अब 70 साल से ऊपर की उम्र है उनकी, and although I mean over 70 is not something in politics which can be against you, but he seems to have lost that gusto. बीच में बीमार भी थे वो एनर्जी नहीं है उनके अंदर, you can make out from his voice and things like that. तो ये तो मैंने शुरू से असेसमेंट कर लिया था कि अगर ये पीएमएलएन जीती भी तो नवाज शरीफ नहीं आ सकते प्राइम मिनिस्टर। शहबाज इज इन द वे, शहबाज। और एक वक्त हो रहा था कि शायद द पीपीपी में इंसिस्ट के द प्राइम मिनिस्टरशिप शुड कम टू बिलावल, और अगर ऐसा होता तो फिर नवाज और शहबाज दोनों नहीं आ सकते सरकार में। कोई यू कांट एक्सपेक्ट कि दोनों के दोनों अपने बच्चे के सामने वहां पर आएंगे एक ही सरकार के अंदर। इन दैट केस मरियम नवाज would probably have stepped into the government, but fortunately that has not happened for them. और दोनों पार्टियों के लिए अब ये ऐसी चीज हो गई कि शहबाज who's a compromise, a middle level candidate kind of way to think of it, वो आ रहे हैं, वो बनेंगे प्रधानमंत्री, बनेंगे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मरियम को अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब में उनको देना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं मरियम नवाज को पंजाब देना जो है ये कुछ, इट मे नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन। देखिए पंजाब की पॉलिटिक्स जो है बड़ी एनर्जेटिक पॉलिटिक्स, बड़ी अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेडिकलिज्म आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस। इट्स वेरी रोबस्ट दैट होल सिस्टम देयर। तो इसको फ्रॉम एन इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन एट दिस स्टेज आकर और एकदम से पैराशूट करना इस सिचुएशन में, आई थिंक इज अ फ्रॉट विद डेंजर। तो मगर मुझे नहीं लगता कि पीएमएलएन वाली की लीडरशिप जो है will want to lose this moment, because they do not want anyone else than the family perhaps. They think कि ये वक्त है फैमिली को बढ़ाओ और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो है यही होंगी, मरियम नवाज ही होंगी। तो वो सिचुएशन भी आएगी अभी हाल में, आप देखेंगे। नवाज शरीफ विल बी लाइक अ मार्गदर्शक, ठीक है, वो रहेंगे वहां पर। एंड ऑफ कोर्स for him personally, for him it's a good thing that he has come back, क्योंकि he has suffered. उनकी you know his wife also died while he was in
abroad while he was in hospital in fact. और उन दिनों में आर्मी ने काफी इनको जरा प्रेशराइज करके ट्रीट किया था, मगर अब जो है ऑल दैट इज बिकम लाइक अ क्लीन स्लेट. वो सब पीछे की सब ऑल दोस केसेस हैव बीन वाइप्ड आउट एंड ही इज कमिंग बैक. ही हैज कम बैक एंड मैं समझता हूं कि अब वो प्राइमरली बैकग्राउंड से इसको देखें करें. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीछे से देखेंगे तो ये तो जो इतना ग्रैंड कमबैक किया सर, उसका नहीं लगता आपको? देखिए, ग्रैंड कमबैक उस वक्त लग रहा था प्री इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए. जब नतीजा देख लिया और उसमें देख भी लिया कि वो केमिस्ट्री नहीं है आज. देखिए, पॉलिटिशियंस को भी हमें समझना चाहिए पॉलिटिशियंस को कि उनके भी बैरोमीटर होता है जिससे कि वो देखते हैं कि पॉपुलैरिटी क्या है, हाउ मच आर यू जेलिंग विद पीपल. तो नहीं लगता मुझे कि नवाज शरीफ साहब अब जेल कर रहे हैं लोगों के साथ वहां पर. और देयर इज अ डिमांड फॉर फ्रेश ब्लड, नॉट टू से दैट शहबाज इज फ्रेश ब्लड इन एनी केस, बट ही इज देयर फॉर द इंटरिम. ये तभी मैं कह रहा हूं ये सब इंटरिम के लिए है और अभी कन्वीनियंस ऑफ द आर्मी के लिए है. ये आर्मी के लिए ये बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन है अभी. जब तक आसिम मुनीर चीफ है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई जो है उनका ज्यादा चांस है आने का सत्ते में या किसी तरह से वो प्रोग्रेस करने का. अब हालांकि ये टसल चलती रहेगी, ये जो है झगड़ा जो चलता रहेगा, ये इमरान खान की तरफ से भी ये छोड़ा नहीं जाएगा. दिस वी हैव नॉट सीन द लास्ट ऑफ इमरान खान. आई said this exactly to couple of other observers from Pakistan कि we have not seen the last of इमरान खान. We should accept it. वो प्रिजन में है चाहे बाहर है. आजकल देख लीजिए आप, सोशल मीडिया के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने पूरा तहलका मचा के वहां हिला दिया सबको, वो अपनी स्पीच देकर. ठीक है, तो ये सब चीजें तो बाहर से लोग करेंगे उनके लिए. They will not allow the public to forget him as such. He is a iconic figure within Pakistan politics. क्रिकेट कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड कप जीता है, सब है. जो कुछ भी गलतियां और की हो दूसरी बात है. तो दे आर नॉट गोइंग टू लेट हिम बी फॉरगॉटन. तो द पीटीआई विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. खैबर पख्तूनख्वा में उनके ऐसे भी उनको तो सत्ते में आगे आ रहे हैं, वो वहां मिल जाएगी उनको, सरकार बनाएंगे वहां पर. सो द इंपॉर्टेंस एंड फोकस विल कंटिन्यू टू रिमेन विद द पीटीआई. इट्स नॉट दैट it is wiped out from the slate of Pakistani politics as such. So with that in mind, the next 5 years जो हैं is not like Indian politics, जहां पर आप देख रहे हैं कि after a long time progressively stability बनती जा रही है. ठीक है, अब 303 सीट पे बैठी है बीजेपी. अब कह रहे हैं कि 400 सीट की तरफ बढ़ेंगे, शायद अगर ना अचीव करें कम से कम शायद तकरीबन नजदीक आ जाए. सो इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी एट द सेंटर, इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल फॉर द नियर फ्यूचर. ये पाकिस्तान में नहीं हम कह सकते, बिकॉज ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट जैसे आया है, इसको लेकर आई डोंट थिंक एवरीवन इज गोइंग टू सिट बैक एंड से कि अगले 5 साल तक हम जो है सेटिस्फाइड हैं और ऐसे ही चलाएंगे पाकिस्तान को. There'll be a lot of dynamism in politics. There will be a give and take. After all, Pakistan के अंदर सिर्फ politics is not based upon these 3 parties. There's the Pakistan Army with the biggest political party, which is there itself. Then there are different movements all over. फिर अफगानिस्तान की तरफ से आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है. डुरान लाइन पे हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ईरान के साथ भाई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है मगर है, प्रॉब्लम भी हो रहा है. बलूचिस्तान के अंदर अभी भी मूवमेंट चल रहा है. So there are lots and lots of things which are impinging on Pakistan, just which can influence Pakistani politics anyway, in any direction. Economically, सबसे बड़ी चीज है कि इकोनॉमिक्स. इस साल का मॉनसून आए, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि गर्मी बढ़ेगी, मॉनसून बढ़ेगा, जबरदस्त होगा, इंडस जो है उसके अंदर जबरदस्त सैलाब आएगा. फिर अगर वही हो गया कि 1.5 मिलियन 2 मिलियन लोग इविक्ट होकर वहां से बाहर निकल आए, this climate change is going to affect them very, very badly. So there's if you really look at it, there's multiple factors which are affecting Pakistani politics. इंडिया में ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, इकोनॉमिकली स्टेबल है, पॉलिटिकली स्टेबल है,
aspirations हैं. In other parts of the country, there are aspirations. There are differences between the center and the states, etc. But that kind of a problem which Pakistan is undergoing at the moment, वो हमारे कहीं नजदीक नहीं है. सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा, डायनामिज्म इन पॉलिटिक्स. मैं उस टाइम पे हंस रहा था. मैं बोला सर इज बीइंग टू पोलाइट. तो डायनामिज्म तो पता नहीं सर, but it is covered. The word dynamism covers all these shenanigans. चलिए इसको shenanigans कह देते हैं. किसकी कुर्सी कौन गिराएगा वो अलग है. we know all things are working. जी हाँ बिल्कुल. But sir, somewhere down the line, आपको क्या लगता है? These leaders are actually concerned about the country, sir, because जिस तरह से, and might I say, parts are literally separating out of Pakistan. एक एक करके पाकिस्तान के बारे में ये बात तो, ये पाकिस्तानी साइकोलॉजी के बारे में हमको बात करनी चाहिए. If you go back to 47-48, India was fortunate that we inherited the whole national movement. Virtually the whole national movement came into India. उधर जो गया वो bits and pieces went there. आपको मैं famous कहानी अब हद पे बताता हूँ. I think I have also told you that the person who was appointed the Chief Justice of Pakistan stated in his first statement, he said, मैं दिल्ली में रहकर Chief Justice रहूंगा. ठीक है. He thought that this is just a temporary arrangement. पाकिस्तान कहाँ से बनेगा कभी? पाकिस्तान तो अभी चलिए टेम्पररी, जब तक अंग्रेज चले गए तो पाकिस्तान बन गया. मैं जो हूँ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, मैं दिल्ली से काम करूंगा. बिकॉज इट वाज नॉट इन द इमेजिनेशन ऑफ पीपल के पार्टीशन इस तरह से आ सकता है. और पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे दे वर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं थे, साइकोलॉजिकली नहीं थे, मिलिटरीली तो बिल्कुल ही नहीं थे. अगर आप देखें 47-48 की लड़ाई में भी किसको इस्तेमाल किया? ट्राइबल्स को भेजा उन्होंने. तो जब ये बैकड्रॉप को देखते हैं आप 50s का, और कितनी जल्दी 1958 में सदर अयूब, प्रेसिडेंट अयूब खान आ गए पावर में, और लास्टेड फॉर 10 years, गाइडेड डेमोक्रेसी, दिस या दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स किए, भारत के साथ लड़ाई अननेसेसरीली ली. ऑल दिस स्मैक्ड ऑफ immaturity, the inability to understand. Not to say that India, we had a great understanding of national security or anything like that. आप देखा सन 1962 में क्या हुआ, ठीक है, on this whole idea that the security of India can be run by the police, by the national police, armed with a couple of sticks and things like that. ये सब चीजें, these were all, well, these all immature thoughts on national security. But Pakistan को तो हाल ही बुला था, and it has never grown beyond that. उस बाद आप देखिए 71 की लड़ाई के बाद भी भुट्टो आए पावर में. 6 साल भुट्टो रहे, 5 साल 1972 से 1977 तक रहे. What was Zulfikar Ali Bhutto? I mean, no one in Pakistan will like my saying this, but what was Zulfikar Ali Bhutto? What you saw his actions in the United Nations, जिस तरह से कागज फेड़ के फाड़ के बाहर निकल आए. Which statesman in the world does a thing like that? So Pakistan branded itself in that manner. And by the time the Cold War ended, of course, 1979, 1980 से लेकर 89, they became the frontline state. तो उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई, स्ट्रेटेजिकली बहुत बढ़ गई. Americans gave them a tremendous amount of leverage. उसके बाद 89 के बाद जब इनका हाथ छोड़ा पहले और फिर बाद में फिर पकड़ा 2001 में, तो पाकिस्तान somehow in that interim period also would never get out of those shackles. अगर आप point to point history पढ़िए पाकिस्तान की, you will realize they have never been able to get out of the shackles of immaturity, to come up and do something for their own people. देखिए भारत में ये बात है कि देखिए, we've had pioneers, we've had in the interim period, we have had great nation builders, irrespective of the party. You see today, the manner in which civilizationally India is growing, its importance is growing. आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री यूएई में है. आज देखिए वहां मंदिर का उद्घाटन हो रहा है. I mean, इंडियन सॉफ्ट पावर है. पाकिस्तान का कोई कह सकता है पाकिस्तानी सॉफ्ट पावर है? कोई चीज इस तरह की है? You see, power is not about the gun itself. Power is comprehensive in nature. And I think the asymmetry between India and Pakistan today is so, it is actually frightening how the asymmetry is rising. Because जब asymmetry इतनी हो जाती है between neighbors and neighbors who have never been on friendly terms, then it becomes even more dangerous. So I was always thinking that someone like Nawaz Sharif perhaps will now at this stage of life
rise above all this, look at what can you do for the people. अगर एक दफे झांक कर भारत की तरफ देखें तो 10 years of what India has seen in 10 years or last 20 years, or let's take it from 1991, 33 years में जो इंडिया ने प्रोग्रेस की है, इसको अगर हम देखें और खास तौर पे पिछले 10 साल को देखें, they should study it and say कि उनको भी 2047 अमृत काल के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए. Is anyone talking in Pakistan? No one is looking at it. I don't think they even know कि कुछ ऐसा होता है. I mean, they are so stuck in today and so stuck in the politics, unnecessary politics of today, that they have no vision for the future. वही मैं कह रहा हूँ कि if that famous example of आतिफ मियाँ, जो उनके इकोनॉमिस्ट थे, जो जिनको वर्ल्ड बैंक से लेकर आए, यहाँ पर अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया, इमरान खान ने बनाया, और क्या हुआ, 1 महीने में 1.5 महीने में कादियानी है तो उनको निकाल दिया कि नहीं हमें एक्सेप्ट नहीं. अरे भाई, तुमको वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिस्ट मिल रहा है, अपने ही तुम्हारे देश का है, ठीक है, अरे किसी और तरीके से खुदा की तरफ वो देखकर जो भी है प्रे करता है या करता है, कम से कम एक्सेप्ट करो उसको अपने देश में. डू समथिंग फॉर योर ओन पीपल. भाई इस थॉट प्रोसेस में जो ये लगे रहते हैं ना, इससे ये होप नहीं बनती है कोई. And you find, therefore, a lot of immigration taking place from Pakistan. Lots of people going out today. Most of their talent seems to be going out. Although I would say, capability-wise, भाई देखिए उनकी भी capability. After all, they're South Asian ethnicity है, जुगाड़ है, और इस तरह की चीजें हैं. जो something which is really typically Indian is also there. It's a question of harnessing those resources, harnessing this energy together to give it a fillip towards. This is something which our honorable Prime Minister has been able to do, and harnessing this energy of the nation together and giving it a futuristic outlook and saying, by 25 years के अंदर, this is how it should be. This is how Deng Xiaoping did to China, 1978. Exactly. 4 modernization देखे, और देखिए एग्रीकल्चर करिए, टेक्निकल एजुकेशन करिए, इंडस्ट्री देखिए, आर्म्ड फोर्सेस देखिए, और देखिए आप कहां से कहां पहुंच गया देश. तो दिस इज सम, आई होप दैट people in Pakistan will start looking at it in this way. If nothing else, they should start aping what's happening in India. Just झांक कर देखें इस तरफ, और कुछ नहीं तो I'm sure one of the things I'm sure we will be discussing the whole future of Indo-Pakistan relations. मगर इसमें तो शुरुआत में ये है कि भाई restore your relationship. अपना हाई कमिश्नर भेजिए वापस, यहाँ हमारे हाई कमिश्नर को बुलाइए वहां पर थोड़ा. I think a time will come in the very near future when this will probably happen. मुझसे किसी ने सवाल पूछा अगले कुछ दिन पहले कि do you think प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा पाकिस्तान में उसको फोन करके उसको मुबारकबाद देंगे? मैंने कहा बेशक देंगे, मुझे तो लगता है कि बेशक देंगे, because he's a man. It'll be more of a tweet sort of a thing. Yeah, absolutely, he's a man above all this. He's a man above all this. After all, 2014 में भी उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को यहाँ में न्योता दिया था, बुलाया था. उसके बाद 2015 में खुद गए थे, surprised everyone by going to Lahore at that time. तो ये चीजें as an entity, एक मैं पाकिस्तान को पर्सनली सब I'm with the kind of nonsense that they do all the time, तो मैं तो कई बार ही बोल चुका हूँ यार, I don't think it's a country. ये खुद ही बोलते हैं ना Pakistan is an idea. So I say Pakistan is a space, in the middle of space one thing is there which is called Pakistan. Because sir, if you look at it, I mean, and this is a light statement, but मैं अगर आपको थोड़ा सा substantify करूँगा, I'll take 30 seconds, sir. Balochistan never had a leader in terms of an opposition. Today, Maharang Baloch, she's become a world-renowned voice. People are talking about her all over the world. Sindh, yes, the PPP is there, but the PPP this time, जो इनकी performance हुई है Sindh के अंदर ही, shameful, literally. I mean, they were not able to. ये तो पंजाब की बातें करते हैं, and they've diverted the attention. But if you look at the so-called votes that came in for PPP, it's not good.
KP, they have no control over, and now they've given it to Imran Khan, which is a Taliban Khan. There's a reason why they used to call that. Gilgit Baltistan, they don't call it a province even. वहां पर आप देख लीजिए सर, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहां से तुम बिजली चोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो all that stuff is there. These things were not known before. These things were not in the public domain before. These things were not in front of the world before. ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये जो fault lines हैं, ये बन के बाहर आई हैं सर. How does this impact the status or the entity that is called Pakistan? And after that, the sprinkling of this election, you know, S is in the brackets and election, so election. अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और ये पिछले 1.5-2 साल में जो हुआ है, खासतौर पे इट इज बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग सोशल मीडिया और वो पाकिस्तान ऑफ कोर्स अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि ये सब खबरें बाहर आने लगी हैं. बट व्हाट इज वेरी स्ट्रेंज, अगर आप देखें इस इलेक्शन के बारे में, 4 जो मेन प्रोविंस हैं, सिंध के, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, चारों में अलग अलग पार्टीज आई. और मतलब अभी सत्ते में आएंगी चारों पार्टियां आए अलग अलग. 4 different parties. You see, in India also there's a problem, but we've got 36 states, so you know, it gets distributed, it gets evened out. यहाँ 4 states के अंदर, 4 provinces के अंदर 4 अलग अलग parties pulling in different directions. Fortunately, at least for the moment, इनके लिए PPP और PMLN जो पंजाब and सिंध हैं, वो कम से कम I think they will work in the interest of each other. Although बिलावल भुट्टो ने कहा है कि issue based हमारी support है इसके लिए. तो but I hopefully for their own sake, not for anything else, for their own sake, I hope that they learn to work with each other. खैबर पख्तूनख्वा के साथ इनका कुछ लगाव होगा नहीं, बलूचिस्तान के साथ इनका ज्यादा एंटी हो ही रहेगा. गिलगित बाल्टिस्तान में पीओके में चीजें उभर रही हैं, movements are taking place, it's all coming to the surface, and unless they wake up to it, now this is the golden opportunity they've got. Unless they wake up to it, they may just find the sand shifting from under their feet. अब इसी में जो है, the problem is, जब इस तरह की स्थिति आती है, it makes the army stronger. Because so far one thing which is there is that पाकिस्तान आर्मी के अंदर ethnic divisions अभी तक इतनी intensely नहीं आए हैं. You see, what is there in terms of differences in politics between the regions have not entered into the Pakistan army in that manner. It is still a reasonably disciplined army, but I do find, I'm told that there are indicators that ये सब भी है वहाँ पर. But the Pakistan army, it strengthens them when they see these differences taking place. And यहाँ सबकी उम्मीद है, of all those people who have voted for Imran Khan and the youth and things like that, सबकी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान आर्मी जरा अपना छोड़े, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, कंट्रोल ऑफ फॉरेन, कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी, इन सब को छोड़े, ताकि the normalization of Pakistan's civil life can take place. But if given the fact that it is such a frittered mandate in 4 different provinces, I don't think the Pakistan army can afford at this stage to try and give a leeway. तो मैं तो समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, slowly coming into his own, कितना 1.25 साल हो गया है उनको, साल हुआ है, I think, a little more than a year. तो हाँ, नवंबर दिसंबर ना, तो just दिसंबर में आए, 1.25 साल हुआ है उनको. He came in the beginning, he was shaky, although ex-DG ISI should not be shaky. He was not very long as a DG ISI. मगर ये shaky थे. 9th मई के इंसिडेंट, 9th मई 2023 को लाहौर का जो इंसिडेंट था, उसने इनको और शेकअप किया. हालांकि इन्होंने हैंडल अच्छा किया उसको, मैं अभी भी कहता हूं ये कि हैंडल अच्छा किया इन्होंने, बट इट shook him up, but it made him grow up. और अब इस इलेक्शन को उन्होंने हैंडल किया है, at least to my mind, I think in terms of certification, the Americans will probably give him a clean chit, give him a high marks in the examination which he has undergone at the moment. दे तो दिया ना सर, they said he will work with any government, दे दिया. बिल्कुल. तो वही इनकी, तो his
his coming of age is taking place along with this election. And आप देखेंगे कि बाजवा साहब से ज्यादा ये आगे बढ़ के जाएंगे. 3 साल, अगर कोई सोच रहा है कि 3 साल के लिए ये बैठे हैं यहाँ पर, he will be looking at 6 years and perhaps 9 years also. ठीक है. So the Imran Khan has to contend with Asim Munir for very long. And one thing is clear, that Asim Munir, to allow Imran Khan or the PTI to come to power as long as he is there, as long as he is in Pakistan, because इनकी enmity ऐसी है, बिल्कुल कांटे की है इस वक्त. He will not allow Imran Khan to come to power in under any circumstance. हालांकि इमरान की भी कोशिश चलती रहेगी. तो Asim Munir is a very important player in this whole game. He's not going to let go of power. He's not going to let the Pakistan army go weak. He will try his best to keep the power going. And internally, जो dissensions, जो लोग कह रहे हैं कि there is a cleavage within the Pakistan army, dissensions हुए हैं, ethnically हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि younger officers के बीच में हुआ है, between younger and senior officers, etc. To my mind, at least, the indicators are not so intense. हुए हैं, बेशक हुए हैं, मगर इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं that they make a grave difference to the existential aspects of Pakistan army. सर दूसरा, the army itself, अगर आप देखें, they've been taking hits. This is another equation जहां लोगों ने खुले में आर्मी को गालियां निकाली हैं, and which is not something that happens very often in Pakistan. As a matter of fact, the interesting thing that मेरे को जो दिखने में आया है कि 71 जो बांग्लादेश का क्या नाम है इंसिडेंट था इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, the independence of Bangladesh that came out to be, that is the referral a lot of Pakistanis are giving. And ये जो 1971 का जो narrative निकला है, ये भारत से नहीं निकला. We didn't come out and say this. ये खुद बोलना शुरू हो गए हैं. Yes, I have been reading about this. ठीक है, that is point one, sir. So the people understand कि यार, this is not going to happen. Because somewhere down the line, there is a state is only a state when people believe it is a state. I agree. I agree entirely with you. What if the Pakistani मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी ये indicators आ रहे हैं. I personally feel that लोगों का जो एक belief in यार ये मेरा देश है, वो जा रहा है. That is what I want to comment upon. देखिए 1971 जो था वो उतना बड़ा 24 साल के बाद हुआ था, ठीक है, और बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में हुआ था, and they called it upon themselves, the whole thing, with the mistakes that they made. Yes, it has definitely, आज के youth more advanced, more ebullient, more information based, पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पास्ट को भी देखा है उन्होंने. Yes, you are absolutely right. उनके दिमाग में भी, जहन में भी यही आ रहा होगा कि ये ऐसी सिचुएशन वैसी ही है जैसे 1971 में हुई थी. मगर इसी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, फ्रॉम अ फिजिकल एंगल, फ्रॉम an angle of dichotomy between the existent elements of Pakistan, all this was quite something quite different. आज जो है ये एक लैंड मास के अंदर ये लोग हैं, मगर चारों प्रोविंसेस के बीच में इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं है. But the worst of all is that they do not believe in the Pakistan army. Something which the Pakistan army actually, despite the loss in 71, despite they never lost. 65 में तो हारे थे, मगर वो कहते हैं कि हमने जीते थे. 6 सितंबर की विक्ट्री डे भी सेलिब्रेट होती है. 71 का जिस जनरल से मैंने बात की है पाकिस्तान आर्मी के, वो यही बताता है कि हम हारे नहीं. बांग्लादेश की जो लड़ाई थी वो तो वन साइडेड एसिमेट्रिकल लड़ाई थी, और अब मुक्ति बहनी आपके साथ थी और तभी आप जीत गए. वेस्ट में देखिए, पश्चिम में देखिए, क्या आप जीत सके इस तरह से पश्चिम में? अब उनको कौन समझाए कि भाई ये स्ट्रेटजी ही अलग थी. और वेस्ट में, पश्चिम में हमारी मिनिमम फोर्स थी, जो होल्डिंग फोर्स थी, वहां पर उन्होंने भी काफी अग्रेशन दिखाया.
और जब ईस्ट की लड़ाई खत्म हो गई तो हमारे सब फॉर्मेशन वेस्ट में आ गए, एंड वी कुड हैव कंटिन्यूड द वॉर एक्चुअली, बट वी कॉल्ड इट अ डे बिकॉज ऑफ इंटरनेशनली रूस ने, सोवियत यूनियन ने भी कॉल्ड फॉर अस टू टेम्पर आवरसेल्व्स अ लिटिल. ठीक है, ये चीजें वो समझेंगे नहीं. They want to believe what is there in their minds. So उनके पास, पाकिस्तान आर्मी के पास अभी तक वही है, गुरूर जिसको कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं गुरूर, that pride. It's not been broken till now. It should have been broken, I thought, in 1999. नहीं टूटा. सियाचिन में नहीं टूटा. कितनी दफे इनके साथ हुआ है कि जहां पर इनका गुरूर टूटा नहीं है. Will it need one more war between India and Pakistan for that pride and that gurur to break? मैं नहीं चाहता ऐसी चीज को, मैं नहीं चाहता. No soldier will want it that way. But I think the Pakistan army should realize itself that what it is doing to its nation, the way it is taking it down the path completely, कि ऐसी स्थिति आएगी 10, 20, 25 साल में जहां एसिमेट्री भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा होगी that the levels of tolerance within the population will reach a nadir. So they will just not be able to tolerate it. और एक दफे ये सड़कों पे आ गया. One of the first questions which came to me at the time when the election results were declared was, do you think this is a Pakistan spring? Do you think ये Arab spring अब पाकिस्तान में आएगा? और मैंने spontaneously, बिना सोचे बिना, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं आएगा. It's still too early. अभी और वक्त लगेगा. This has to build up into a very energetic kind of a movement. Leadership नहीं है अभी उसके लिए. एक new young leadership will emerge, which will perhaps have to fight back, push back against radicalism. खास तौर पे ये जो ये radicalism streets में आता है, which comes and overcomes all the the energy and fervor of the youth, that has to come. There has to be a energy among the youth to bring about a new spring from dictatorship to democracy. ये जो फेमस किताब है, एक अमेरिकन ऑथर हैं जो जीन शार्प की किताब है, उसको कोई पढ़े तो उसी से मालूम होगा कि दुनिया में हर जगह में एक स्प्रिंग आता है इस तरह से. जहां डिक्टेटरशिप होगी वहां से डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी का एक मूवमेंट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड अ पॉइंट विल कम व्हेन इनवेरिएबली जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर्स हैं, वो दे विल हैव टू क्लाइम डाउन. पाकिस्तान का स्प्रिंग भी आएगा, मगर मेरे ख्याल में थोड़ा वक्त है उसके लिए. सर मेरा fair enough, I'll take just I find them to be a deadbeat society, but let's argue on this particular point. That's my personal feeling, and that's perfectly all right. एक जो आपने बोला ना, the war with India, today there are more possibilities. There can be a war with Iran. They just, by the way, some terrorists coming out of Pakistan killed some colonel in the Iranian border. The Iranians have warned them. There could be some tamasha with Afghanistan. Could be an internal tamasha with the way that these people are armed. KPK, Balochistan, wherever. Because Balochistan, BLA is becoming the Much attack and this and that. Much and Chitral, I find these two operations that were done were turning points in terms of Pakistan's capability जो होती है ना, आपकी एक देश को पकड़ के रखने के लिए. आपका सिटी टाउन जो भी कह लीजिए वो पकड़ के बैठ गए. चित्राल तो बहुत बड़ा एरिया था. तीसरा, there can be of course the fracas with India. इनको जब तक अकल आएगी नहीं सर कि भैया अब वो हो गया है, जब तक एक पार्ट और नहीं टूटेगा इनका. That's something which I kind of it's a very hardline statement to make, but देखिए इसमें एक बात है इसमें, applying rationale to Pakistan and especially to the Pakistan army is something I have learned for very long. There is no need to apply rationale. ठीक है, आप हम यहाँ पर बड़ा अप्रिसिएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा. वो in the case of Pakistan army especially and Pakistan as a nation, there is no need to do it. यहाँ चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं.
ठीक है, कोई सम मेवरिक एलिमेंट विल कम एंड डू समथिंग। अब जैसे वो लबाइक वाले हैं, तरीके लबाइक, वो आए, इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद रोड को घेरे में ले लिया, एटसेट्रा। यू सॉ दे वर ऑल, एवरीवनस एनर्जी वाज ऑन दैट ओनली एट दैट टाइम। तो इस तरह की मेवरिक चीजें पाकिस्तान के अंदर होती रहती हैं। एंड टुडे पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर जो है, द मोस्ट पीसफुल बॉर्डर जो आज है वो भारत के साथ है, कश्मीर के साथ बॉर्डर। that is supposed to be the most stable border today. अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ क्या बॉर्डर है इस वक्त, ठीक है। तो और सुनने में आया कुछ फायरिंग वायरिंग भी हो गई है अभी हाल ही में, जब से हम डिस्कस कर रहे हैं तब से कुछ फायरिंग भी हो गई है। बीएसएफ ने भी जवाब उसका दिया है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया में, कहीं रंजीतपुरा में या आरएसपुरा में, रणबीर सिंहपुरा के इलाके में कहीं हुआ है। तो आई डोंट गिव टू मच क्रेडिट टू दैट। ये वन ऑफ जो चीजें होती हैं तो होंगी, एंड 1 साल से नहीं हुआ है, 1.5 साल से नहीं हुआ है, एकदम से कुछ ना कुछ होगा, सम मेवरिक एलिमेंट विल डू इट। आई डोंट थिंक एज ए स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे करना है तो इक्का दुक्का कश्मीर में भी होगा, इधर उधर होगा, इक्का दुक्का टेररिस्ट एक्शंस भी होंगे, just to make themselves relevant. I always say Pakistan cannot lose relevance in Jammu and Kashmir. जिस दिन उनकी relevance गई, मतलब they are no longer a major stakeholder, then the population does not consider them to be a major stakeholder, उस दिन जो है पाकिस्तान can forget Kashmir. अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी स्थिति ऐसी नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने में हुए हैं, वो हो रहे हैं अभी भी। So Pakistan will, while all its internal problems are going on, its economic problems are going on, its climate change problems are going on, they will still want to make sure that their stakes in Jammu and Kashmir are kept alive. तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। Jammu and Kashmir, and we should be prepared for that. We should not be reactive to that. मैं कहता हूं कि हमें कोई रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है इन चीजों पे। पाकिस्तान हमारा चू नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, हमें इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, चू नहीं कर सकता हमारा। दे कांट टच अस इन एनी वे। इकोनॉमिकली क्या कर सकते हैं, कल्चरली क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड रेपुटेशन वाइज क्या कर सकते हैं, सिविलाइजेशनली क्या कर सकते हैं, मिलिटरीली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो दे वो छिड़ा हुआ जो वो है एलिमेंट जो है, वो पीछे बैठकर कुछ ना कुछ इधर उधर चालें चलता रहेगा। इट विल नॉट रियली अफेक्ट अस। व्हाई आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलरली from an Indian point of view is that in India we should be very clear. 2047 हमारा मुद्दा है। अगर हमें डेवलप्ड स्टेट होना है तो हम ये टैक्टिकल बैटल्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो है ना, फायरिंग्स इधर और फायरिंग्स इधर और एक ऑपरेशन इधर और एक ऑपरेशन पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस, ये चीजें हमारे बस की नहीं है। These are too small for us. We are a large nation, we are an important nation, right? And we have a leadership which has got much larger ideas, much larger aspirations. So इसलिए the Indian public must learn to live, must learn how to, जैसे उभरता है देश ना, we have to have a public also understand how exactly we need to grow. We can't put pressure on our leadership कि आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड करिए। आज पाकिस्तान ने ये किया तो आज आप ये करिए। अरे करने दो इनको, खुद ही आएंगे ये। They will themselves come to you. There is no other option for them. You will see in the next couple of years, take it by words, you and I will have a program in 3 years time in which you will quote this program and say कि वो जो हसनैन के साथ हमने बातचीत की थी फरवरी 2024 में, उन्होंने ये कहा था कि भाई 3 साल में पाकिस्तान आएगा हमारे पास। लेकिन वो तो ठीक है, अभी इन द फ्यूचर इज देयर, वी नो these guys they can't sustain themselves, there is just no question. And मैं तो I am looking for that incident where पाकिस्तान में जहां पर that the final match will be lit, because it has to happen for every country. जब अकल आती है कि यार कर क्या रहे हो भाई। I thought this would be sooner than later अकल आएगी। अब ये जनरेशनल चेंज आएगा पॉलिटिक्स में। हालांकि next 5 years I can't foresee that. Yeah, I thought this incident would be the one. नए breed of politician जो आ रहे हैं, ये मुझे कभी-कभी लगता है, I'm not sure,
I may be mistaken, but new breed of politicians like Bilawal Bhutto, ये वो जो है, हालांकि they have to sing the old tune. इनको तो बोलना तो पड़ेगा, sing the old tune. But to my mind, scratch them, perhaps they could be different. I'm not saying they are different. They could be different. Could be. Yeah. I mean, the मेरे को लगा था ये इसमें इस इंफॉर्मेशन में इस जगह में कुछ होगा, इस इलेक्शन में कुछ निकलेगा, बट नहीं the polity and the people are dead inside, and till the time that वो एक झटका नहीं लगेगा, they won't realize it. And you know, the good thing stability आएगी ना, थोड़ी stability और आएगी, फिटर्ड इतना मैंडेट नहीं होगा, कोई ऐसा डिसाइडेड लीडर आएगा who's got time and to focus, pay attention to development of the people और ट्रेड के ऊपर जोर दें. ठीक है, आई मीन इसी इनका पोटेंशियल बहुत है इनका. अगर भारत के साथ ही मिल जाए ट्रेड के लिए, इकोनॉमिकली अगर वो भारत के साथ अगर they agree, you see the same policy which India and China have. We may have all the world of differences on the Chinese border, on the Himalayan borders, मगर तब भी हमारे 125 बिलियन 1.5 बिलियन का ट्रेड तो चल रहा है. मच ऑफ इट मे बी अगेंस्ट अस, मगर ट्रेड तो चल रहा है. किसी न किसी वक्त हमारा भी सत्ता ऊपर होगा इन टर्म्स ऑफ आवर द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर. उसी तरह से पाकिस्तान को भारत के साथ सोचना चाहिए. ये दे कैन ओनली बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट. दे हैव परसेप्शन के भारत जो है वो चढ़ जाएगा उनके ऊपर, हमारे गुड्स जो है फ्लड हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, एंड दे हैव नो चांस टू बी एबल टू कम्पीट अगेंस्ट इट. आई थिंक a controlled kind of a way things can happen in a much better way. Sir, अभी तक we were talking about from Pakistani perspective. Let's look at it from हमारे अंदर तो बिल्कुल भी, in the public I don't see an appetite for even P of Pakistan. Not even in the leadership, because हमारे leadership बोल रहे हैं भैया no talks without terror. That is a very clear. अब वो back channel ये वो चलता रहेगा. But in the public, sir, you know, in the people, I don't see that, because people are saying भाड़ में जाओ यार, we don't care. You see, I think Pakistan took it too far. We spent 80 years trying to talk to you. एक जमाना था जब पीपल टू पीपल का वो था. 2003 में आपको याद है, आई डोंट नो वेदर यू वर फुली इनटू इट एट दैट टाइम. इन 2003 परवेज मुशर्रफ वाज इन पावर, एंड एक क्रिकेट मैच हुआ था लाहौर में. यहाँ से पूरी पब्लिक दिल्ली से पंजाब से गई थी वहां पर, और सब आए बल्ले बल्ले करते हुए, कहे वहां तो कोई हमसे पैसे भी नहीं ले रहा था पाकिस्तान में. ऐसी पीपल टू पीपल हमारी वो बनी हुई थी. वो कहा सबने कि भाई हिंदुस्तान से आए हो, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. अब वहां से लेकर अब 21 साल लेटर यू सी व्हाट इज the people to people relationship, and we have actually, in the Indian people have got disgusted with it. Disgusted, absolutely. That is what has led to this. Absolutely, and that's the whole thing. So they might have an appetite to sit down and talk to us, but do we? And would any politician in India इस time पे to spend, भैया मैं अपना political capital डाल के मैं पाकिस्तान से बात करूं, जूते पड़ेंगे उसको सर घर पे. वो this can't happen pre-election, तो हो नहीं सकता. Post election, you see, post election क्या स्थिति होती है, and how our international handling of the international environment, how it progresses. Because I foresee the next government, a strong government which will play a very decided role internationally, and we can't be seen only to be looking at the outer perimeter and not in the inner perimeter. The inner perimeter of South Asia, we have to take it along with us, and in that Pakistan must be included, because it will only come to our long-term assistance. This approach will come to our long-term assistance. You know, but then the appetite needs to be there within the people, which I don't. You have to build up. I mean, nobody can force it down. It has to be built up. It has to be. It has to. You know, it's. I don't see that appetite at all right now. कि लोग मानेंगे भी इस बात को कि उनके साथ बात हो रही है या कुछ ट्रेड हो रही है या कुछ हो रही है. Absolutely. वो तो that's a given. Yeah. Sir, let's get into थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं, guys. Amazing discourse. I think बड़ा realistic discourse हुआ है, क्योंकि actually, as I was saying, people will yes, no talk, no terror, no way, you know. So
see, this is the ground reaction, This is and this is a this sampling of people. is 1500 this लोग is देख the रहे हैं हमको. this is public reaction in India. Yeah, Absolutely correct. ठीक है? yeah. We have suffered. When a nation suffers this kind of a thing, and you see body bags going home and things like that unnecessarily. ठीक? Mhm. Soldiers को छोड़ो, I mean even migrant labor and things like that, कश्मीर के अंदर इस तरह की चीजें जब हुई हैं, it creates disgust in the minds of people, and There is therefore it will have to be a generational change which will only change this. So I don't foresee anything like talks etc. taking place now. Maybe baby steps in the sense that return of high commissioners to their embassies, that doesn't take away anything very much, and perhaps a look at trade which will be beneficiary to us. We should look at the things which will be beneficial to us and to Pakistan, both. there's a thumbs up that appeared on your channel on your screen for some reason. Uh, let's get into some questions. And guys, like the video here, subscribe to the channel. If you've not, please spread the word. आप लोग dev talks के बारे में लोगों को बताइए, सबसे important. Uh, and most importantly, guys, like is the most important. We got 518 likes. There's almost 1500 people watching. I think we can increase the likes, so please hit that like button जोर से. हथौड़ा लेके जरा उसको मारिए so that ज़्यादा निकले likes. That's very important. And you can contribute towards the Dev Talks efforts. QR code या PayPal use कर सकते हैं आप, या फिर super stickers और super chats भेज सकते हैं. बकरा उल दाढ़ी भैंस उल बाड़ी. Interesting name, I must say. Jai Hind, General Hasnain and Aadi ji. Jai Hind sahab. 15th August is not Independence Day, but a partition day when the British, UK, US took some parts of India permanently. Yes, treat it whatever way you want to. The only thing, we can't turn back history. Instead of looking at it from any other point of view, look at it how to consolidate what you have with you, right? And look at aspiring to get back what you don't. Don't set timelines. कभी भी टाइमलाइन मत लगाइए. ये आदत होती है बहुत. किसी को जब सवाल पूछते हैं तो लोग जंप करके कहते हैं कल तक, परसों तक. नहीं, don't lay down. Have patience. ठीक है? Because पेशेंस के साथ ये चीजें आती हैं. धीरे धीरे आप unnecessarily timelines लगा के अपने आप को, you will tie up yourself up into knots. Keep aspiring. Don't forget. Aspire. Make sure you consolidate what you have. अब आप देख रहे हैं भारत के अंदर जो कुछ है आपका, it's in good shape. India is in good shape. There are problems here and there. Should put problems तो हर जगह हर देश में होते हैं. As diverse as India, the problems are there. We should try and overcome them with sagacity and continue to aspire to make sure that what we don't have with us comes back to us. Absolutely, sir. The next question, average middle class gamer. Thank you so much, brother. It's always an honor to listen from you, sir. My grandfather used to say, first step to find a solution of a problem is to admit and know where is the problem. Pakistan is only on step 0. They are happy there. Thank God I'm an Indian. That's more of a statement than a question. Yes, I agree. All of us, thank God, we are Indians. Right? Thank God we are Indians. Because you just have to step across and have a look. Although I have not been into Pakistan. I did want to go at one time as a part of a delegation for talks. I was told don't go. And I said, yes, I'm quite happy not to go. Right? But frankly saying, I study Pakistan. I study Pakistan a lot. And that's what you all should be doing. All of you who appear on these shows, who come and listen to these shows, etc., don't go away with this second-hand knowledge that you're getting from me or from Aadi. जो हम कह रहे हैं ना, इसको जाकर सोचिए, इसको जाके पढ़िए. अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल्स को पढ़िए. ऑनलाइन जो है, जिस तरह के फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है, इंटरनेशनल ओपिनियन क्या हो रहा है इसके बारे में, उसको देखिए. एंड मेक अप योर ओन माइंड. Make up your own mind. Don't just go away with things which you have heard from here. AA, thank you so much. I heard in a news that in 2017, when a retired Pakistan Lieutenant Habib Zahir was caught close to the Indo-Nepal border, he went missing as per Pakistani channels. He's in Indian jail. They claim Jadhav wasn't given a death sentence due to this particular development. Is that true, sir? Not known. I know. I'm fully aware of this. 2017
17. Was this a 16 के colonel बाद or a हुआ। lieutenant, 16 sir? just after this incident which happened in 2019, actually the incident happened. हाँ. ये वाला जो था अपना, no sorry, Jadhav का case was 2016-17. You're right, absolutely. And yes, around that time, I can only say that there were rumors. I don't know authentically. There were rumors that there was a Pakistani officer attempting to cross over from Nepal who was caught and taken into Indian custody. These issues, I mean, yeah, they sound very interesting in a discussion like this here and there, but actually they're of no consequence. They're really of no consequence. Not to say that the case of Jadhav is not of consequence. Jadhav's case is very important because I still feel that unfairly he was caught in a third country. Not He was caught kidnapped, in Pakistan. Kidnapped. Why? Caught kidnapped. He was taken from a third country, from Chabahar, and brought back here. And by rogues, all these rogue elements who are involved even today in the current problem between Pakistan and Iran, right? So that was a very, very devious thing to do. And if we are holding someone in our custody as a counter, etc., so be it. It's a good thing. At least one life is saved there. I don't think Pakistan will take the extreme step of doing anything to Kulbhushan. Hopefully not. And this is what we pray for. Saurabh Illumina says more pro-Bharat think tanks are needed. How can I help? How can a citizen help? What do you mean by a pro-Bharat think tank? I want to qualify the statement that you have made. Okay. Everyone is a pro-Bharat thing. Anyone in India who is analyzing these international problems, etc., is pro-Bharat. How is he anti-Bharat? You see, looking at a problem from different angles doesn't make you anti-national. I want to make that very clear to you. I may have a different opinion, and you must listen to my opinion. And I must respect your opinion, and you must respect my opinion. That is how nations grow. Nations don't grow by having one unidirectional thinking. Remember that. You go to the United States, you go to lots of countries in the West, etc. You'll find hundreds and thousands of think tanks. Koi idhar bol raha hai, koi udhar bol raha hai, koi udhar bol raha hai. And let me tell you, I've done courses in the United States. I've stood up in the United States in the midst of 150 US officers and criticized their policy. I told them, you learned nothing from Vietnam. What did you learn from Vietnam? I told them. I said, you only learn from your victories. You came into the first Gulf War, you won, and therefore today you claim everything from that victory. Where you have losses, you have never learned your lessons, and you'll be surprised. The Sincan, that's the commander-in-chief of the not Sincan, sorry, Commander-in-Chief Pacific, the PACOM, sorry, Pacific Command, PACOM, Commander-in-Chief was there, and he said, I fully agree with you. That's large-heartedness. Yeah. Listen to someone who disagrees with you. He says, right, and have a different opinion. We are still pro-Indian. We are still both Indians. I may have a different opinion. You may have a different opinion. But we are for India. We are for one country. Right? And a country becomes stronger when it has got diverse opinions, all converging towards the common aim of being good Indians. So what he meant to say was, I mean, the fifth columnists, जो deal करने का medium चाहिए, a leftist strong media presence to defame India as their business. Yeah, there are loads of them. करने दो भाई, क्या हो रहा है तुमको? Can they defame India? अरे कौन करेगा? Have you seen the strength of India today? The rising power of India. I love to answer these questions. The rising power of India, the strength of India. इस पर क्या कोई चोट पहुंचा सकता है इस तरह की? Criticize करने दो. It doesn't make him anti-national in any way. Yeah. Research and analysis wing, thank you so much. He says, I went to JD waiting to meet General Saab and take his Asirwad. He never comes. Went to JD means where? कहाँ है? JD क्या है? Jaipur Dialogues. Oh. I was one of the first speakers in Jaipur Dialogues. Let me tell you. 2015-16 में जब सेटअप हुआ था, मैं गया वहां पर. I still remember
I came from Pune, flew into Jaipur. संजय दीक्षित साहब के साथ मैंने पूरा एक सेशन किया था सुबह. Flew out. Next year I was back again. I did one exclusive with them separately. I've been doing it with them online all the time. Next time, इस time पर I was not available here. मुझे जाना पड़ा Darjeeling. I think I was in Darjeeling or I was in the northeast somewhere for some issue regarding disaster. तो मैं तभी आ नहीं सका. Next time I am in Jaipur Dialogues. Please come up. We must shake hands together. जब shake hands क्यों, हम जप्पी मारेंगे. Dhruvaji, thank you so much. He says, sir, when will we retake POK? Why? How do we handle their radicalization? Before sir says anything, भैया क्यों चाहिए यार, माफ करो, नहीं चाहिए. ये मैं सबको ये कहता हूँ. क्यों? I don't need मोल it. लेना है प्रॉब्लम अपने लिए. Yeah. आएगा जरूर, आएगा आपके पास. वक्त के साथ आएगा. वक्त के जिस साथ. तरह से चीजें हो रही है वहां पर, बाप रे बाप. दूर रखो इसको. So Parth has said, thank you so much, Parth. Off the topic, sir, but he says he specifically asked this question because you are present PLA to get directed energy weapons installed on their ships. Is this possible? If yes, can we? What can be used as a defense to this? Mirrors? भाई ऐसा है. There is no. I am not certain about the presence of direct energy weapons on any surface-borne platforms. I'm not aware, right? Yes, this is an aspect of Star Wars. It was very much there as a concept to dwell upon satellites, to dwell upon missiles which are being launched, where you have enough reaction time, etc. Of late, a lot of people have been asking me questions about the use of directed energy weapons on artificial man-made disasters. Yeah. This is an interesting aspect. You'll be surprised. Rajnath ji ने बोला था. दो जो हुए हैं अभी इंसिडेंट्स, एक 2021 में नंदा देवी के नीचे चमोली डिजास्टर, और दूसरा जो अभी सिक्किम में हुआ है. दोनों में इतने जबरदस्त घमासान साइज का आइस ब्लॉक नीचे गिरा है लेक के अंदर, जिसकी वजह से लेक हैज ओवरफ्लोन. कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस वाज, कि पानी उसके अंदर से निकलकर came down and destroyed a whole dam. Now ये जो है, I have no proof of anything, but imagination के अंदर आता है इस तरह की बर्फ का पिघलना, टुकड़ा निकलना इतना बड़ा. It can only happen with some kind of a directed energy, and a lot of people are suspecting that today, but I have no proof. We can't talk about it. Absolutely. Rajnath Singh ji ने भी बोला weather modification. He said that. A compliment for you, sir. General Hasnain, our respects to your leadership during the Uttarakhand tunnel rescue mission. Your daily media briefings are a masterclass in crisis communications. Take a bow. Oh, really? Take a bow, and thank you so much. This is what makes your day when you get a compliment of this type, which is absolutely unexpected. मैं आपको एक simple principle बता देता हूँ इसके handling का, और ये मैंने सीखा कश्मीर में, और फिर सीखा, उसी को निभाया मैंने इस सिरकियारा टनल के तजुर्बे में. The moment you clam up, the moment you shut your ears off, the moment you shut your mouth up and don't want to talk to the media will get after you, and they will write anything and everything and then put it, label you on it, that you are the person who has said it, and you will be in circles trying to deny things here and there. मेरा एक basic principle है, I have a mutual respect with the media. मैं मीडिया के साथ जब बात करता हूं उसके बाद अलग अपने आप को अवेलेबल रखता हूं, जिसको बात करना है, जिसको इंडिविजुअली बात करना है. And there was a time during the Silkiara tunnel rescue when in an afternoon I gave 24 people a different bites. क्या आप आइए, I will give you. I know that it is your job to bring this to the people, so let this be an exclusive one for you from my side. And all the media came to me, and you found information flow because of that was that much more dynamic. खूब information flow हो रहा था, कोई nothing was being held back. And people were getting surprised कि how is it that a government spokesman is speaking so much? सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ खबर दे रहे हैं. Nothing to hide, we were transparent. We were not sure that we are going to succeed.
मगर हम डिनाई नहीं कर रहे थे कोई चीज, हम कह रहे थे कि हम शायद फेल भी हो जाएं. This transparency is always what helps in the handling of media. I don't know if you would like this comment, so please, my apologies right now, but I have to take this out of turn. Jack Sparrow. He says, Lieutenant General Syed Hasnain, sir, your tenure has struck fear in the Pakistani army. They call you the BUT CHER, if you know what I mean, of the Pakistani army. So ये I think तो someone knows your I reputation, don't sir. get carried away by these khitabs. पाकिस्तान आर्मी की आदत है ये सब चीजें बात करना. One doesn't get carried away by this. No, but someone knows your reputation, I think. I'm glad if it's known to them. And I do remember that जब मेरी पोस्टिंग आई आउट फ्रॉम कश्मीर, तो एक इंटरसेप्ट आया था. उस इंटरसेप्ट में दो टेररिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे, और जो टेररिस्ट उस पार था उसको इधर का टेररिस्ट भारत की तरफ का जो हमारे तरफ यहाँ बैठा था कश्मीर में, वो उसको कह रहा था कि बहुत अच्छा दिन आ गया कि इसका तबादला हो गया यहाँ से. तो ये पूछता है किसका, तो उसने कहा ये जो इनका कोर कमांडर है यहाँ पर. तो दैट मेड माय डे दैट समवन वाज सेलिब्रेटिंग माय पोस्टिंग आउट. ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है. AA, thanks so much once again. So we'll take a few more if you don't mind. This is an interesting conversation. Take another 5-7 minutes more. I would suggest not doing trade with Pakistan. Actually, I used to buy from them, and their products are very weak. Mind you, it's a huge company based in Lahore. Trust my judgment, as I am a baniya too. नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है. पाकिस्तान में कोई चीजें उनके प्रोडक्ट्स जो हैं, Cotton. I have walked into POK. I have walked into POK across the command bridge. सबसे पहली जो फ्लैग मीटिंग हुई थी to open the Muzaffarabad road to allow the Karwane Aman to go through in 2005. And the first meeting was conducted by me with the commander on the other side and the chief engineer of 10 Corps. And मुझे अभी तक याद है हम बहुत अच्छी चीजें लेकर गए थे उनको. Those are the good days, those are days of peace. हम लेकर गए थे वहां पर, और वो वहां से पिंडी की मिठाई लाए थे हमारे लिए. और मुझे स्टिल अभी भी याद है कि उनके कमांडिंग ऑफिसर ने मुझसे कहा कि सर आप ये खाइए, ये आपने कभी नहीं खाया होगा, एंड यू विल बी शॉक्ड. व्हाट इज दैट थिंग जो मैंने कभी नहीं खाई होगी. उसके अंदर से उन्होंने निकाल कहा कि सर हम इसको बर्फी कहते हैं. एंड यू कैन इमेजिन देन आई हैड टू टेल देम कि अरे साहब बर्फी तो भारत से आपके पास गई है, आप बर्फी की बात क्या कर रहे हैं. दिस इज द परसेप्शन वहां पर प्रेवेल करता है कि ये बर्फी जो है वो भी पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है, और हमारे पास हमको एक्सपोर्ट की है. तो हालांकि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर हाई क्वालिटी एंड मोस्ट इंडियंस रिकॉग्नाइज इट एंड अंडरस्टैंड इट आल्सो. बड़े उनके कपड़े कुछ होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, कुछ और भी चीजें. आम बड़े सम ऑफ द मैंगोज आर वेरी गुड. आई हैव ईटन देम इन लंदन. बड़े अच्छे उनके आम कुछ होते हैं एक्सेट्रा. सो दे कैन बी अ गिव एंड टेक. ऐसी बात नहीं है. एंड वी विल नॉट सफर इन एनी वे. आई डोंट थिंक वी विल सफर इफ माहौल अच्छा चाहिए. माहौल बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड हो, देन ओनली इट शुड हैपन. I mean, their cotton is very good. There's no question. इनकी बेड शीट्स होती थी एक टाइम पे. They were very very good. Unknown Gunman 007. आज की सिचुएशन देखे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गए, नहीं तो वो पागल लोग भारत में रहते तो अंदर से बर्बाद कर देते. This I personally agree with. I mean, you gotta have some sort of crackpot sitting over there who literally ruined the country. But so this is an interesting thing with this rumint of ceasefire violation which has happened. Bhartiya says, Hasnain sir, what is the chance that Pakistan will try some military adventurism on their borders to divert attention from internal problems? This is a common question which comes. It comes at most times when there is a problem inside Pakistan, right? But 2-3 factors you got to remember in this. Twice in this tenure of this current government, it happened that a adventurism led to a retaliation which was ownership of which was taken by the government of India. ये फर्क था. See, the ownership which was taken in the surgical strikes in 28th of September 2016 and 26th of February 2019, इसके अंदर ownership भारत की सरकार ने ली. Okay, and that established a threshold.
आप ये करोगे तो हम आपके ऊपर ये कर सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल सेड के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, बालाकोट था, वो those were actions done for deterrence. No, they were not actions done for deterrence. They were actions done to message. एंड मैसेज से डिटर्रेंस निकलता है, उस मैसेज से डिटर्रेंस निकलता है कि आप समझते हो कि हम चुप बैठेंगे यहां, आप ये करोगे तो हम आपके ऊपर उससे डबल करेंगे। No ruler in Pakistan army also cannot take a risk today, क्योंकि वो उन्होंने एडवेंचरिज्म थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल उड़ी का ब्रिगेड कमांडर हूं मैं पुराना। मैं आपको बता सकता हूं कि उड़ी पर जो उन्होंने 4 टेररिस्ट भेजकर कोशिश की थी, उससे शुरू में उनके हमारे 4 जवान मारे गए, वे किल्ड इन एक्शन। अगर वहां तक रुक जाता शायद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं जाती, मगर दैट इंसिडेंट वो भड़क गया, उसमें वहां पर फ्यूल भी रखा था, आग भी लग गई, टोटल 20 जवान डाइड। नाउ द थ्रेशोल्ड वाज क्रॉस्ड, unacceptable to the Indian public, unacceptable to the government of India कि 20 जवान जो है वो इस तरह से if they are killed in action and we don't respond at all। तो इसलिए जो एडवेंचरिज्म की आज आप बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। एडवेंचरिज्म की बात जो करें आज, इट इज अ टेम्पर्ड एडवेंचरिज्म। बड़ा ख्याल करना पड़ेगा उनको, और कोई श्योरिटी नहीं है कि उस ख्याल के साथ भी दे विल नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड। हमारे एक बलोच साहब हैं जो आते हैं काफी, सर, मोहम्मद बलोच साहब, he says Pakistan has a chance to break up, if so when will Pakistan break up? By the way, he writes very beautiful Hindi। ये कभी कभार कमेंट्स लिखते हैं हिंदी में, मजा आ जाता है पढ़ के। तो मुझे इन द फोर्सिएबल फ्यूचर नहीं लगता ऐसा। देखिए, ये याद रखिए कि भारत के बहुत दोस्त हैं। We have great friends like France, the United States itself, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के दोस्त हैं हमारे। पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, ये याद रखिए। पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के दोस्त हैं। अमेरिका उनका दोस्त है, चीन उनका दोस्त है, चीन उनका बड़ा दोस्त है। सो इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज टू सी दिस एरिया, वेरी वेरी क्रूशियल एरिया, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन के ऊपर बैठा हुआ, access into the heart of Asia, access into Xinjiang and West China, access into Afghanistan। ये ऐसा इलाका, इसको हिला हुआ नहीं देखना चाहते हैं, हिला हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो एज अ रिजल्ट तभी तो आप देखते हैं कि एकदम से जब अमेरिका को कहीं से एमुनिशन नहीं मिला यूक्रेन को देने के लिए, तो वो पाकिस्तान से लिया, $600 million वर्थ ऑफ एमुनिशन उठा लिया यहां से, और सर्वाइवल के लिए $600 million दे दिए, आप रखिए इसको। ठीक है, तो ये खेल जो हैं, these games will continue being played। There is no question, sir। ये तो I mean Americans, तो अभी तो ईरान is the latest found love of America ना, तो वहां के लिए भी चाहिए। Yes, of course। और we haven't seen the end of this problem which is happening at the moment। अभी तो रेड सी से लेकर हमने someday we must have a discussion separately just on this area। रेड सी से लेकर अफगानिस्तान तक, इनफैक्ट अप टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। वी शुड जस्ट टेक दिस होल रीजन एंड discuss it completely। Probably in the next week or the week after that we could do it, sir, no problem। Absolutely। Last few questions, sir। Tarani sir says the one consistency of Pakistan policy is the anti-Bharat stand in general and a jihad stand with 1,000 cuts in particular। Your views? Survival of the Pakistan army is based on this philosophy। अरे जिस दिन वो if they have to sell the views that we are the best friends of the Indian army, तो पाकिस्तान आर्मी की क्या अहमियत रहेगी? See, this is what the Pakistan army has sold to the public in Pakistan right through, right? That our sworn enemy, we can never be friends with them, you know, from an ideological angle, everything that India only looks at our territory and our land. India never wanted partition at that time. They did not want the creation of the state of Pakistan. I mean, this is the kind of philosophy which they have always been talking about, right? So they have to continue talking it. Even if we find peace tomorrow, you will find a tempered way to ensure that there is a slight anti-India bias always existing in the minds of Pakistani people.
that you take for granted. Trickster, sir, compliment for you. Namaste, respects for the service and dedication from you and all the armed forces. You are an inspiration to keep us going. Jai Hind, sir. Thank you. And of course, Hawk TV says, sir, watching you from Kashmir. Kashmir is an integral part of India. We are proud Indians. The people of Kashmir were fooled by the Pakistani army till now. I think that's the best thing to close on. That's the best statement to close on. Coming from Kashmir. अगर कश्मीर से ये आ रहा है ये स्टेटमेंट और ये जहन में आपके है तो I think slowly we can declare that we have won. Thank you so much, sir. Although there are hundreds and hundreds of questions here, this is always a touchy topic for all of us. But thank you for actually taking the time out and talking Very to us. enjoyable. I thoroughly enjoyed it. शुक्रिया बहुत बहुत सबका धन्यवाद and namaskar. Jai Hind. Jai Hind.